Welcome to GATE ESE lecture. We are in lecture number 105 and this is your 7th module MOSFET. And in this lecture video of depletion mode MOSFET, depletion type MOSFET, we are going to discuss about two important cases of DMOSFET. Now what are those cases? In the first case we'll be taking where we're going to fix our output voltage, where your output voltage will going to be fixed. In the first case your output voltage will going to be fixed at some value and you are going to vary but in the second case you're going to vary your output voltage and keeping your input voltage constant. It's a very simple thing. The second case basically is the same case that you have in studying the same case from JFET, your MOSFET, EMOSFET, the same thing. In the first case at some particular value of VGS, and some particular value of VGS you're going to have a linear, then there will be going to have a saturation region. It's the same thing, okay? But the first case is a bit different and this is going to be a very interesting discussion. It's going to be a very simple concept, extremely simple concept. I want your 100% attention here for this case. Now let's start with the first case where your input voltage is varying and your output voltage is constant. Now case 1, VDS is constant, VGS is varying, okay? When VGS is 0 volt, of course VDS is constant, I'm going to vary VGS value. First I'm going to put VGS as 0 volt, then we'll get into VGS at negative, then there will be more negative, then there will be positive. We're going to vary VGS value. So at 0 volt of input voltage, here we are varying, I'm again telling you, here we are varying our input voltage. So let's take a voltage at 0 volt. At 0 volt, look here carefully. आप खुद बताओ, देखने से पहले बताओ. Just आपके डिप्लेशन मोड मॉसफेट में when your VGS is 0 volt, उसमें क्या होता है? Sir, VGS 0 volt depletion mode MOSFET means the only way depletion mode MOSFET, depletion type MOSFET, DMOSFET is different from EMOSFET is even if at 0 input voltage, we do have a fabricated channel which present between your source and drain. सर आपके 0 voltage पे भी आपका चैनल प्रेजेंट होगा, यही सर कॉन्सेप्ट है DMOSFET का. हाँ तो या फिर यहाँ पे 0 volt में क्या होगा सर? चैनल प्रेजेंट होगा सर. हाँ फैब्रिकेटेड चैनल इज प्रेजेंट. तो सर करंट भी फ्लो कर रहा होगा ना सर? हाँ करंट विल बी फ्लोइंग, करंट IDS इज फ्लोइंग एट 0 voltage इवन इफ एट 0 voltage. पर EMOSFET में क्या होता था सर? EMOSFEट में हम लोग को चैनल फॉर्म करना पड़ता था, हम लोग को VGS वैरी करना पड़ता था और इस पॉइंट पे चैनल हो जाने के बाद आपका करंट फ्लो करता था और करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग आफ्टर आवर चैनल गेट फॉर्म्ड कंप्लीटली सर. हाँ यही होता था सर एनहांसमेंट में. पर यहाँ पे आपके 0 वोल्टेज पे ही आपका करंट का वैल्यू मिल रहा है, 0 वोल्टेज पे ही आपका करंट का वैल्यू मिल रहा है. यू गॉट दिस पॉइंट? हियर इन दिस डिप्लेशन मॉसफेट आपके 0 वोल्टेज पे भी आपके करंट के वैल्यू मिल रहा है. लुक हियर केयरफुली. आई हैव टेकन दिस सेम थिंग हियर. वही वो जो फर्स्ट केस था ना, फर्स्ट केस का फर्स्ट पॉइंट, ओके, फर्स्ट केस का फर्स्ट पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया है. लुको, first point, second point, third point. We are still in the first case only, okay? But there will be different value. We'll see at a 0 voltage, then we'll make it negative, then we're going to make VGS more negative, then in fourth case we're going to make it VGS more positive, and we're going to study what are the behavior of DMOSFET. Now look here, VGS at 0 volt, channel is already present. अरे तुमने तो सही बोला, channel is already present, fabricated channel is present, so current is there. ओ तो ऐसा होता है. तो तुम बोलो फिर से VGS नेगेटिव हुआ, तो अगर मैं सरफेस में यहाँ पे अभी 0 है, अभी अगर मैं नेगेटिव दिया तो क्या होगा सर? नेगेटिव होगा तो ये P सबस्ट्रेट है ना, सो फ्रॉम P सबस्ट्रेट होल्स विल ट्राई टू गेट अक्यूमुलेटेड ऑन दिस चैनल रीजियन.
ओ, तो फिर चैनल विल गेट इनटू डिप्लीटेड ना. हाँ सर, ये जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है ना यहाँ पे, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर इन दिस चैनल, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर इन दिस चैनल will decreases, will decrease, concentration of electron decreases due to these holes will try to get accumulated over here in this surface. Okay, जिससे कि आपका channel goes depleted. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, channel goes depleted मतलब हमारे EDC के भाषा में बोलेंगे तो चैनल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और करंट डिक्रीज होगा. गॉट दिस पॉइंट. तो फिर सर अगर VGS का और ज़्यादा नेगेटिव कर दिया तो एक पॉइंट पे IDS जाके पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना. हाँ, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लुक हियर, VGS, when VGS became more negative, your IDS will be zero, your current will be shut down, your current to shut the current down, your input voltage has to be applied more negative, or at a very negative, at the maximum negative value of VGS, your current shuts down. Okay, you understand this point. तो the voltage at which your current shut down, your current बंद हो जाता है, जहाँ पे जिस voltage पे, that voltage will be regarded as your क्या, pinch of voltage. Correct, input voltage का वो हो जाएगा pinch of voltage. So you're going to have a clarity here in this graph. आपको इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा. बट हियर और एक केस हम लोग देख लेते हैं कि VGS को अगर हम ज़्यादा पॉजिटिव किए, ऑब्वियसली बिना पॉजिटिव का यहाँ पे कुछ चैनल्स थे. लुक यहाँ पे जब जीरो था यहाँ पे चैनल्स थे. नाउ आई एम अप्लाइंग पॉजिटिव, सो और भी चैनल हो जाएंगे, चैनल और भी इफेक्टिव होगा, और भी बहुत इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो विल कम फ्रॉम द p substrate, also the minority electrons. And if you apply more positive over here, there will be more accumulation of electrons, so your IDS will increases and your channel resistance will decreases. This is the cases, this is the different stages of VGS value. So you can say we are varying the VGS. This is the case one where we are varying the VGS value and we are studying the IDS. So you can look here carefully, my dear friend, look here carefully at a zero value of VDS. I'm sorry, at zero value of VGS, we are having a current. So I can draw the graph like this, and I'm going to extend this graph in this way. क्योंकि at more value of, at one large value of negative value of VGS, your current is shutting down, आपका करंट ज़ीरो हो रहा है. तो ये है आपका ओवरऑल ग्राफ. तो ये जो एरिया है, दिस एरिया विल बी ऑन योर डिप्लेशन मोड, यू कैन से इन दिस वे. So this will be your enhancement mode and this will be your depletion mode, because our depletion mode at a very maximum negative value of VGS value, ये आपके VGS है ना, at VGS at negative value, your pinch of voltage is you'll obtain the IDS value as zero current. Okay. Now with this we are done with the first case. VDS is constant, VGS is varying. Now I'm going to vary the VDS value and I'm keeping the VGS as constant. Look here carefully. Now if you do so, if your VGS is constant, VDS is varying, we're going to have the same condition as that of before. For small value of VDS value, current will increase linearly first, then device will, and in this region device will behave like a voltage variable register, obviously. And after that, if you increase for large value of VDS, this is your VDS ना, यही सब चीज़ हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं ना. This is your
दिस इज़ योर व्हाट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उस टाइप का ही होगा, ये लीनियर बिहेव करेगा और उसके बाद it for large value of VDS current reaches the maximum value, and large value of VDS current will reaches the maximum value and remains constant. Okay, the same case. Okay, with this we are done with various cases of depletion mode MOSFET. Must watch our next video lecture for having a detailed analysis of various very important node points. We'll see you in the next video lecture. Till then, bye.